Hello students, hope you all doing well. So the topic for today is data presentation. So previous lectures में हमने डिस्कस करा था डेटा ग्रुपिंग जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करा था एंड उससे पहले हमने डिस्कस करा था हाउ टू डिस्क्राइब द डेटा सो जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी एंड शेप करा था सो डेटा एनालिसिस आपका ओवरऑल टॉपिक है जिसमें वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डिस्क्राइब द डेटा how to group the data, and now after grouping after the frequency distribution, now the third is data presentation. So how to present the data. So let's start. So these are the books from where the PPT content has been made. So first is the business analytics, the science of data driven decision making. U Dinesh Kumar is the author, and second is the applied business statistics, making better business decisions. Ken Black is the author. So data analysis, as we know, it is an integral part of the statistics and it assists decision makers with useful insights. Data analysis may we are covering the topic that is data presentation. It is always advisable to start an analysis project with data presentation. So let's start. So presenting the data. So one of the most effective mechanism for presenting data in a form of meaningful to decision makers is graphical depiction. So through graphs, you can present your data. So graphical depiction is the tool. Through graphs and charts, the decision maker can often get an overall picture of the data and reach some useful conclusion merely by studying the chart or graph. Converting data to graphics can be creative and artful. So one of the most important uses of graphical depiction in statistics is to help the researcher determine the shape of the distribution. So पहले आप data present कैसे करते हैं? You can present the data with the help of graphical depiction. And graphical depiction जो होता है, it helps the decision maker to get the overall picture of the data. So also it helps in determining the shape of the distribution. जो आपका distribution है, जो representation है frequency distribution का, उसकी shape क्या है? So it helps in determining the shape and it helps the decision maker to get an overall picture of the data. So जो graphical depiction होता है उसमें जो data graphs होते हैं, they can be classified as quantitative and qualitative. So we will discuss one by one quantitative में क्या क्या graphs हैं and qualitative में क्या क्या graphs हैं. So first we would start with quantitative. So quantitative data graphs are plotted along a numerical scale. So जब आपके पास numerical values होती हैं and you draw a graph, those graphs are called quantitative data graphs. Types क्या क्या हैं quantitative data graphs के? First is histogram, then you have frequency polygon, then you have ogive, then you have line chart, dot plot, and stem and leaf. So these are the types of quantitative data graphs. So let's start. A histogram. First हम start करेंगे histogram से. So histogram क्या होता है? Definition मैं आपको पहले इसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ. दिस इज अ हिस्टोग्राम. सो हमने जो न्यूमेरिकल लिया था प्रीवियस क्लास में जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थे, उसमें जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था. सो यू ऑल नो 1 to 3 3 to 5 5 to 7 दीज वर द इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी उसकी वो हमने डिटरमाइन करी थी कितने नंबर्स हैं उस क्लास इंटरवल में. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में आपके पास आते हैं these are class end points. जो frequency है आपकी interval है 1 3 5 7, these are all end points of your interval and this is frequency. Y axis में frequency आती है. So when you connect these points and जो आपके rectangles बनते हैं, इस पूरे diagram को, इस पूरे graph को हम कहते हैं histogram. So definition, if we see, a histogram is a series of continuous bars or rectangles. So this is continuous rectangle that represent the frequency of the data in given class interval. So frequency in class interval. So construction of histogram involves labeling the x-axis with the class endpoints. So x-axis are, this is x-axis class endpoint 1 3 5 7. These are the endpoints of your class interval.
and y-axis with the frequency. So y-axis is your frequency. Scale along the vertical axis. A dot is plotted for the associated frequency value at each class midpoint. Sorry, this is so the y-axis with the frequency, drawing a horizontal line from the class endpoint to a class endpoint at each frequency value. So आप क्लास 1 से जो उसका एंड पॉइंट है 3 तक यू विल कनेक्ट. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी 4, वैसी 3 to 5 में फ्रीक्वेंसी जो थी उसको कनेक्ट करेंगे. So from each class endpoint to class endpoint at each frequency value and connecting each line segment vertically from the frequency value to the x-axis to form a series of rectangles or bars. So this is your histogram. Histogram में you have to remember y-axis में frequency आती है and x-axis में class endpoints आते हैं और जो endpoints होते हैं उसमें जो frequency होगी उसको आप connect करेंगे. So you will connect this, this and you will complete the diagram and this diagram is called histogram. Second type of quantitative data graph is frequency polygon. Frequency polygon में difference आप देख रहे हैं. y-axis में frequency is there but x-axis में class and midpoint आ गए हैं. So class midpoint हमने determine करे थे last class में how to calculate the class midpoint. It is an average of 1 plus 3 divided by 2. So it is an average of जो end point है आपके interval के उनका average कर देंगे. 3 plus 5 8 divided by 2 that is 4. 5 plus 7 divided by 2 that is 6. So class midpoint आप निकालते हैं and class midpoint को आप x-axis पे रखते हैं and then you put the dot जो उसकी frequency है उस midpoint पे. So frequency is 4, you put a dot. Class midpoint जब 4 होता है frequency is 12, so you will put a 4 पे you will put a dot and then you will connect all these dots. आप इस सारे dots को connect करेंगे और जो आपका diagram complete होता है that is called frequency polygon. So frequency polygon, like the histogram, is a graphical display of class frequencies. However, instead of using bars or rectangles, जैसे आपने histogram में करा था, so instead of using these bars or rectangles, like in histogram, in a frequency polygon, each class frequency is plotted as a dot. So you put a dot. Frequency जो भी होती है class midpoint पे, you put a dot and then you connect those dots. So at the class midpoint and the dots are connected by a series of line segments. Construction of a frequency polygon begins by scaling class midpoint along the horizontal axis. So class midpoint along the axis, horizontal axis, and then along the horizontal axis and the frequency scale along the vertical axis. So frequency along the vertical axis. A dot is plotted for the associated frequency value at each class midpoint and connecting these midpoint dots completes the graph. So second type of quantitative data graph is frequency polygon. First was histogram. Histogram में difference क्या है? The important thing is you have to, the x-axis would be जो आपके क्लास एंड पॉइंट्स होंगे 1 3 5 एंड वाई एक्सिस विल बी फ्रीक्वेंसी. बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें हम, इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द डिफरेंस इज क्लास मिड पॉइंट. सो एक्स एक्सिस में क्लास मिड पॉइंट आते हैं एंड वाई एक्सिस में सिमिलरली फ्रीक्वेंसी रहती है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा ग्राफ इज ओजाइव. दैट इज कॉल्ड ओजाइव is a cumulative frequency polygon. So cumulative frequency आप उसके नेम में ही देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज करेंगे. सो कंस्ट्रक्शन बिगिन बाय लेबलिंग द एक्स एक्सिस विद क्लास एंड पॉइंट. जैसे हमने हिस्टोग्राम में करा था, क्लास एंड पॉइंट आपके एक्स एक्सिस में रहते हैं बट द डिफरेंस इज वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है. That is why it is called cumulative frequency polygon. So construction begins by labeling the x-axis with class endpoint and y-axis with the frequencies. However, the use of cumulative frequency values require that the scale along the y-axis be great enough to include the frequency total. Obviously, cumulative frequency थोड़ी हमारा जो नंबर है वो ज्यादा होता है. सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 थी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं नंबर इज इंक्रीजिंग. सो आपका जो वाई एक्सिस होना चाहिए उसके जो डिफरेंस होना चाहिए जो आप क्रिएट करते हैं, दैट शुड बी लार्ज इनफ सो दैट इट कैन इंक्लूड दीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज. सो यही यहाँ पर लिखा है कि the use of cumulative frequency values required that the scale along the y-axis be great enough to include the frequency total.
or dot of zero frequency is plotted at the beginning of the first class. So zero frequency, यहाँ पर आपकी zero frequency है, that is plotted at the beginning of the first class. At the beginning of the first class, and the construction proceed by marking a dot at the end of the each class interval for the cumulative frequency. So each class interval, that is 3 पे आप cumulative frequency 4 को dot करेंगे, then 5 पे 16 dot, 7 पे 29, 9 पे 48. This is how you put a dot and then you connect these dots. So it becomes your cumulative frequency polygon. Ogives are more useful when the decision maker wants to see the running cost. So कब ogives useful होते हैं? When the decision maker wants to see the running cost. Example, if a controller is interested in controlling cost, an ogive could depict cumulative cost over a physical layer. So अगर वो cost check करना चाह रहा है कोई भी let's suppose controller है, so he can use a ogive. तो ओजाइव डेटा ग्राफ वो यूज कर सकता है, उसमें उसको क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो ओवर द ईयर होगी वो पता चल जाती है. तो स्टीप स्लोप्स इन एन ओजाइव कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई शार्प इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसीज. सो अगर आपका चार्ट ऐसा बन रहा है तो दैट मींस क्यूमुलेटिव कॉस्ट है. लेट्स सपोज ये कॉस्ट का चार्ट है तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. सो दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको हम कहते हैं ओजाइव्स. So this was the third type of quantitative data graph. First आपने histogram करा जिसमें class end point and frequency होता है. Then you have covered frequency polygon जिसमें class mid point आता है और frequency. And third is ogive जिसे हम कहते हैं cumulative frequency polygon जिसमें class end point and cumulative frequency. Now the fourth type of quantitative data graph is dot plot. A relatively simple statistical chart that is generally used to display continuous quantitative data is the dot plot. In a dot plot, each data value is plotted along the horizontal axis and represented on the chart by a dot. So ये आपके पास raw data था जो हमने देखा unemployment rates, और इसको आप नॉर्मली सारी वैल्यूज को लिखते हैं एंड जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर उतने डॉट्स लगा देते हैं. So this is dot plot. That is the reason it is called dot plot. So if multiple data points have the same value, the dot will stack up vertically. So यहाँ पर देख रहे हैं आप, let's suppose 8.4 के 2 values हैं तो stack up हो जाएगा. यहाँ पर कोई 7.5 है उसके n number of times वो repeat हो रहा है तो उतना वो stack up हो जाएगा. So will stack up vertically. If there are large number of close points, it may not be possible to display all the data values along the horizontal axis. So अगर बहुत ज़्यादा आपके पास numbers हैं तो then it becomes difficult dot plot. So dot plot generally एक simple statistical chart है. So dot plots can be specifically useful for observing the overall shape of the distribution of the data points along with identifying data values or intervals for which there are groupings and gaps in the data. So आप identify कर सकते हैं कौन सी वो value है जो बहुत बार repeat हो रही है, and you can also get to know the overall shape of the distribution. So this was the fourth type of quantitative data graph. Now we have the last, that is called stem and leaf plot. तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज अ वेरी सिंपल स्टैटिस्टिकल चार्ट है ये. इसमें आपके पास वैल्यूज होती हैं रॉ डेटा और आप उसको डिवाइड कर देते हैं स्टेम एंड लीफ की फॉर्म में. सो स्टेम इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सो आपने देखा यहाँ से 20 की रेंज से स्टार्ट हो रहा है 23. सो 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 97 तक है. 97 इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो 2 3 4 5 6 7 these would be your stem and leaf जो उसके नंबर जो उसका लास्ट नंबर है. तो लेट्स सपोज 23 है, 2 3 39 थर्ड के जो 3 की डिजिट में है. देन यू हैव 40 की लाइन में जो है 47 एंड 49. दिस इज हाउ यू राइट. So then you have 50 की लाइन में there are 3 numbers 55 56 59. Then 60 में there are 5 numbers 60 67 67 68 68. So इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा वो नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है एंड किस रेंज में ज्यादा नंबर्स हैं. तो लेट्स सपोज 70 की रेंज में 70 to 80 there are more numbers. So one advantage of such a distribution is that the instructor can readily see whether the scores are in upper or lower end of the each bracket. So यहाँ से पता चलता है कि जो lower end है 60 के नीचे जो है there are more numbers as compared to
from 20 to 50. So this is one of the advantage, and also determine the spread of the score कि dispersion कितना है. And the second advantage of stem and leaf plot is that the values of the original raw data are retained. So ये जो original values हैं, जैसे frequency distribution में आप original values को use नहीं कर पाते हैं. जैसे आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सो ओरिजिनल वैल्यूज यूज नहीं हो रही हैं, बट इन केस ऑफ स्टेम एंड लीव द ओरिजिनल वैल्यूज आर यूज्ड. सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज. Whereas most frequency distribution and graphical diffection use the class midpoint or represent the values in a class. तो जैसे हमने हिस्टोग्राम में देखा क्लास एंड पॉइंट यूज हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मिड पॉइंट यूज हो रहा था, देन हमने देखा ओजाई में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, बट स्टेम एंड लीफ में दी ओरिजिनल वैल्यूज आर यूज. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टेम एंड लीफ प्लॉट. सो आपने देखा 5 data graphs हमने कवर करे अंडर quantitative data graphs. Quantitative, so this was the first type of data graph. So graphical depiction is the tool which is used for presenting the data. So आपको data को present करना है, आप graphical depiction करिए, graphs बनाइए. Graphs can be of 2 types, that is quantitative and qualitative. Quantitative we have covered 5 types of data graphs, जिसमें हमने histogram, then we have frequency polygon, then we have ogive, and then we have dot plot, and the fifth one was stem and leaf. Now the next topic would be qualitative data graphs. अब जिस क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल स्केल था, लेकिन जब वी प्लॉट द ग्राफ्स यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल कैटेगरीज, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा ग्राफ्स. So इसके examples हैं pie chart is there, bar chart is there, Pareto chart. So these are the 3 types of data graphs which we will cover under qualitative data graphs. So that is all for today. So if you have any query, do let me know. Thank you so much.